अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ECG चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो फर्स्टली अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम कहते हैं कि एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑकर्स व्हेन द लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी आर टू हाई और टू लो। अगर हम एग्जांपल ले लें कैल्शियम की, तो अगर हम देखें जो सीरम कैल्शियम लेवल्स होती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ बिटवीन 8.5 टू 10.5। और अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल्स की बात करें, दैट इज़ बिटवीन 4.65 टू 5.25 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब अगर ये 8.5 से कम होगा या 10.5 से ज़्यादा होगा, दैट विल लीड टू एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमें ECG चेंजेस देखने को मिलता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे ECG चेंजेस ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। अभी हमने बताया कि नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल्स होती है बिटवीन 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब इन केस ऑफ hypocalcemia इट इज़ लेस देन 8.5, एंड इन केस ऑफ hypercalcemia इट इज़ above 10.5 or more than 10.5 milligrams per deciliter of blood. The normal range of ionized calcium is 4.65 to 5.25 milligrams per deciliter. If it is less than 4.65, it is hypocalcemia. If it is more than 5.25, it is hypercalcemia. अब हम देखते हैं ECG changes in hypocalcemia. Hypocalcemia prolongs the ST segment causing QTC prolongation. Here you can see in this graph, ECG graph, this is the normal one, and here this is the case of hypocalcemia, in which we can see the ST segment prolongation. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ECG ग्राफ की, जिसके ज़रिए आपको हाइपोकैल्सीमिया की एग्जांपल समझ में आ जाएगी। हियर यू कैन सी द QT interval is prolonged of 500 milliseconds. Here in another example of ECG हम देख सकते हैं इसमें जो QTC इंटरवल है दैट इज़ प्रोलॉन्गड। अब हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की। इन हाइपरकैल्सीमिया देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल। ये आप ECG ग्राफ देख सकते हैं। दिस वन इज़ द नॉर्मल एंड दिस वन इज़ द हाइपोकैल्सीमिया जो हमने अभी बताया, एंड दिस वन इज़ द हाइपरकैल्सीमिया जिसमें जो है कि शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल हो जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ECG ग्राफ थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दिस। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि shortening of QT interval होता है, and here in this case of ECG we can see Osborne waves which is caused in severe hypercalcemia cases. ये आप और एक एग्जांपल देख सकते हैं इसमें हाइपरकैल्सीमिया की, जिसमें हमें जो है कि शॉर्टनड और मार्कड शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल देखने को मिल सकता है। The next example of hypercalcemia is very unique. Here you can see in this graph the bizarre looking QRS complexes with very short QT interval, and here in V1 we can see J waves. Now let's see the ECG changes due to hypokalemia and hyperkalemia. First, we should know about the normal range of potassium, which is between 3.5 to 5.0 millimoles per liter. In hypokalemia, it is less than 3.5, and in hyperkalemia, it is more than 5.0 millimoles per liter. A very low potassium level can be life-threatening. A potassium level above 6.5 can cause heart problems that requires immediate medical attention. Now in hypokalemia, let us see the ECG features, which are increased P waves amplitude, prolongation of PR interval, widespread ST depression and T wave flattening or inversion, prominent U waves best seen in the precordial leads V2, V3, apparent long QT interval due to fusion of T and U waves can be seen. With worsening of hypokalemia cases, frequent supraventricular and ventricular ectopics and supraventricular tachyarrhythmias like AF, atrial flutter, atrial tachycardia,
Potential to develop life-threatening ventricular arrhythmias like VT, VF, torsades points can be seen. In addition to this, there are some features which we can see here that T wave inversions and prominent U waves are seen in case of hypokalemia, and the apparent state of prolonged QT interval is actually the QU interval with an absent T waves. The push pull effect can be understood here. In case of hypokalemia, there are T wave inversions, ST depression, prominent U waves. Now, in case of hyperkalemia, there are peak T waves, P waves flattening, P or prolongation, wide QRS complexes. Now let's see the classification of severity of hypokalemia. First is the case of mild case where the levels range from 3 to 3.4, and in case of moderate the range is 2.5 to 2.9, and in severe cases it is less or equal to 2.4 millimoles per liter. Here let's take an example of ECG graph where we can see the hypokalemia. We can see the widespread ST depression and T wave inversion, and we can also see on this ECG graph prominent U waves, long QU interval. This is another example of hypokalemia in which there is showing torsades points, which I will explain you in my upcoming videos. Now in hyperkalemia, let us see the ECG features in hyperkalemia, which are peak T waves, P wave widening, flattening, PR prolongation, bradyarrhythmia, sinus bradycardia, high grade AV block with slow junctional and ventricular escape rhythms, slow AF, conduction blocks such as bundle branch block, fascicular blocks, QRS widening with bizarre QRS complex morphology can be seen in hyperkalemia. With worsening of hyperkalemia, development of sine wave appearance preterminal rhythms and ventricular fibrillation and PAE with bizarre wide complex rhythms and asystole can be seen. Now let's see the classification of severity of hyperkalemia, in which first is the case of mild case in which the potassium level is between 5.3 to 6, and in moderate cases it ranges between 6 to 6.9, and in severe case it ranges more than or equal to 7 millimoles per liter. Here, this is an example of hyperkalemia in which the serum potassium level was 9.3. We see the prolonged PR interval, and we also see the spatial broad and Vizier QRS complexes, and we also see the subsequent and peak T waves. In this example, In this another example of hyperkalemia, the patient had a serum potassium level of 7.0, where we can see the tall symmetrical peak T waves. Now at the end of this video, please do remember these handy tips in case of hypokalemia and in case of hyperkalemia.